As farmers up the ante against the centre over the 3 farm laws in several parts of the country, the protest took an ugly turn. In Uttar Pradesh's Noida, hundreds of protesters clashed with the police. In the images, protesters can be seen breaking down police barriers. In Patna, few protesters were seen threatening commuters, even attacking buses and auto rickshaws with lathis for defying the Bandh call. In Bengaluru, a farmers' leader took it a step further. He ran his SUV over a DCP's foot. Fortunately, the DCP was unharmed. Abhishek Anand joining us live on this. Abhishek, tell us what the situation's like on ground, the kind of intensity of the protests, what's taking shape as we speak. Well, in Noida particularly, if you talk about that particular incident, the Noida farmers are on a separate sit-in since the 1st of September, demanding increased rates on land acquisition and jobs for local farmers and local family members of the local farmers. Now, these farmer unions are not directly related to the SKM, but we are yet to see a response from the SKM about the violence which took place in Noida. They wanted to meet the CEO of Noida Authority, and they were threatening to break the gates and to stoop to violence if their demands were not met. And that is why they took this step on this particular day when the SKM called a nationwide Bharat Bandh. As far as the Gurgaon border is concerned, the commuters saw a heaviest traffic in the recent history. There were thousands of cars actually going bumper to bumper trying to enter Delhi, as there were a number of barricades put by the police to prevent any kind of incident which has happened in the past. You remember the January 26th incident, and that is why all the security arrangements have been tightened up, and all the commuters, be it Gurgaon, Faridabad, Noida or Ghaziabad, all of them are facing similar kind of trouble. Over to you. All right, just stay with us, Abhishek. Farmers continue to be on a warpath against the central government. The Bharat Bandh, called by the Samyukt Kisan Morcha, is to mark the first anniversary of 3 farm laws that have received a mixed response. It was this day last year when President Ramnath Kovind gave his nod to these contentious farm laws. Farmers are protesting on several sections of the national highways across the country. Delhi's Ghazipur border is completely closed. Delhi-Amritsar highway is also affected. Several highways, roads and train services are badly affected in some pockets of Punjab and Haryana. Union Agriculture Minister has urged farmers to adopt the path of dialogue and not protest. The 10-hour-long bandh will be effective till 4 p.m. एक सवाल वाजिब है जो सुबह से दिख रहा है, जहाँ जहाँ भारत बंद है अब कहीं पटरियों पर लोग बैठ गए हैं, तो वो जो असुविधा है वो कहीं बहुत ज़्यादा है नागरिकों को। और बंद में तो भैया सुविधा ही होती है, और बंद में कोई और चीज़ होती है। तो वो सोचेंगे किसान अगर अपने आंदोलन के लिए बैठे हैं, वो भी हमारे अपने हैं, तो अपनों को तकलीफ क्यों देना। वो जब लॉकडाउन हो 2-2, 3-3 महीने देश में लॉकडाउन हो गया, तो उस टाइम पे भी था। ये तो स्कूल कहाँ खुल रहे हैं, यहाँ तो शराब के ठेके तो खुलते हैं, स्कूल तो बंद है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी पिछले 2 साल से। जनता को उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वो भी नाराज होंगे कि देखिए हमारा रास्ता बंद कर दिया। वे नाराज नहीं होते, वो तो खुश होते हैं कि एक दिन की छुट्टी मिलेगी। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूँ कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। आज संयुक्त मोर्चे की कॉल थी जो 27 तारीख को बंद करना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से अब भी अपील करना चाहूँगा, जो कुछ अपने साथी देख रहे होंगे, कि रोड के पर ना आए और किसानों का साथ दें। आज किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश आज जो हालात इस बीजेपी सरकार ने बना दिए। बीजेपी सरकार ना कह के, क्योंकि 2 चंद लोगों की सरकार रहेगी, 4 लोगों की। क्या डिमांड है कि इस बंद के जरिए?
डिमांड वही है जो चल रही, काले कानून तीनों वापस करें, MSP पे बनाए और भारत सबके लिए एक ही बंद करें सब। मोदी है, मोदी किसानों को छोड़ के वो अपने यारों को मिलने के लिए अमेरिका में गया हुआ है। वो वहाँ पे शुगल मेला कर रहा है, वहाँ में रौनक मेला करने के लिए गया है, जहाँ किसान है उनका जो पूरा सिस्टम है वो क्राइसिस में चला गया है। पूरा जितना भी है खेती क्राइसिस में चली गई है। व्यापारियों की सरकार रही है, लुटेरों की सरकार बन गई है भारत में। मोदी सरकार को दसना चाहते कि हम दुखी हैं, हम 1 साल से लगे हुए हैं, हमारे तीनों कानून जितना तेरा रद्द ना किए तो वे ये आंदोलन चलेगा और बढ़ेगा। Abhishek, you know, everyone's regulators have been urging farmers to sort this out through dialogue, but clearly this is one argument that doesn't have a solution. Looking at the way they've come out in protest once again today, a year later, this time do you feel we'll hear anything different in terms of addressing some of their, issues? Well, there have been rounds of talk about these 3 farm bills and the demands of farmers. Every time the farmer union goes inside the meeting room, they have one demand of striking down all these 3 farm laws and guaranteeing MSP, on which the government is not ready to talk on this condition. The farmers are claiming that they don't have any condition to initiate any talks, but this is the major condition on which each time the talks are failed. So this time nothing new is happening. The farmer leaders are adamant about their stand, and the government is adamant that on this condition. So everyone adamant about this, and really no solution inside. Abhishek, thanks for joining us on that. It's the Aam Aadmi who's bearing the brunt due to the Bharat Bandh called by farmers. Thousands of people who left their homes in the morning for office were stuck in a massive traffic jam at various Delhi borders. On your screen are visuals of the Delhi-Gurugram border this morning. Hundreds of vehicles stuck in the jam, bumper to bumper traffic, cars moving at a snail's pace. Vehicular traffic coming from Delhi was badly affected. Other borders of Delhi connecting with UP and Haryana were also badly affected. Huge traffic jam reported at the D&D flyway which connects Delhi to Noida. However, the situation has improved and traffic jams have been cleared by the police. इसको कोलैटरल डैमेज कहूँगा मैं। अगर इस तरह का कोई कॉल होता है, हमको उसको रोकना होता है, तो थोड़ा बहुत इस तरह की असुविधा पब्लिक को होती है। तो ये पिछले साल से चला आ रहा है, हम लोग यहाँ पे कई बार कर चुके हैं और कुछ रोकने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। बट अभी सिचुएशन नॉर्मल है और हम लोगों ने थोड़ा खोल दिया है। अभी सिचुएशन नॉर्मल है, ट्रैफिक चल रहा है। वर्तमान में आपके साथ मैं खड़ा हूँ, हम लोग D&D टोल पे खड़े हैं। कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं है, चाहे वो दिल्ली से नोएडा की तरफ हो या नोएडा से दिल्ली की तरफ हो। जहाँ तक बॉर्डर की बात है तो चिल्ला बॉर्डर में भी अभी ट्रैफिक सामान्य है, कालिंदी कुंज में भी सामान्य है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर की बात करें तो अंदर भी ट्रैफिक सामान्य रहता है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया तो जाम लगा, उस पर क्या कहना है आपका? सर, ये बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है, किसान अपना पॉलिटिक फ़ायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। Several opposition parties have extended their support to the Bharat Bandh call given by the Samyukt Kisan Morcha. Congress, AAP, SP, BSP, TDP, the YSRCP, left parties and the DMK have announced their support to the Bandh. TMC stated it stands with farmers, but they're not supporting a Bharat Bandh. Congress MP Rahul Gandhi tweeted saying farmers' non-violent satyagraha is intact, but the exploitative government does not like it. Another party leader, Jaiveer Shergill, also hit out at the BJP, saying Modi government's dream of Kisani Mukt Bharat will never be fulfilled. All right, let's also go across to Dilip Ghosh.